Assalamualaikum class again. I'm starting the second part of that lecture. थोड़ा सा क्विकली जो है मैं ये वाला जो है पार्ट जो है डिलीवर करूंगा क्योंकि नोट्स आपके पास हैं, इनको आपने फर्दर डिस्कस कर लेना है। अभी जो पिछले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था अबाउट द पर्सनैलिटी को हमने कहा था कि द सम टोटल ऑफ हैबिट्स, ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। इट इज एक्चुअली अ फोर्स और पावर टू डू दिस थिंग्स। सम पीपल हैव मोर पावर एंड सम हैव लेस। और इसमें हमने डिस्कस किया था जो आपकी पर्सनैलिटी है दैट इज डिपेंडिंग ऑन सो मेनी थिंग्स। That depends on your family background, that depends on your environment कि आप किस तरीके से environment के साथ interact करते रहे हैं, that also depends on your IQ level, and there are so many other things which can play the role in developing the personality of a person. Now इसमें अगर हम personality again is a very vast topic, लेकिन इसमें हम ह्यूमन रिलेशन और लेबर रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें दो चीजें डिस्कस करेंगे या दो तरह की पर्सनालिटीज को डिस्कस करेंगे। अदरवाइज हम लिटरेचर में अगर देखें तो देयर आर द डिफरेंट थ्योरीज हु हैव डिफाइंड द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सनालिटीज। देयर इज नो वन और अदर काइंड ऑफ पर्सनालिटीज, बट देयर आर मेनी सॉर्ट्स ऑफ द डिफरेंट पर्सनालिटीज। लेकिन एक जनरली जो है हम इसको कहते हैं कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स। ठीक है, वो भी हम डिस्कस करते हैं इसमें। A person is an entity having a distinct identity with certain distinguishable and persistent characteristics. Okay? Now that is the formal definition of a person. In the most common sense, a person is a human labor being regarded as an individual. Some other characteristics used to define a person include personal identity, self-awareness, individuality, and a sense of self that persists through time. So that is the formal definition or the dictionary definition हम कहते हैं जो person की, individual की, labor की, human की, that can be considered. अच्छा, इसमें देखें दो टाइप के पर्सन्स होते हैं, पर्सनैलिटीज होती हैं। अगेन मैंने आपको बताया कि देयर आर मेनी टाइप्स, बहुत से लोगों ने इसकी बहुत सी टाइप डिस्कस की हुई हैं, लेकिन इधर जो है अभी हम दो तरह की टाइप पर्सनैलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं। एक टाइप ए पर्सनैलिटी है और एक टाइप बी पर्सनैलिटी है। The type A personality is characterized as fast-moving, hardworking, time-conscious, competitive, impatient, and preoccupied with work. Now, this is the sort of personality, or these are the sort of person which are usually desired by most of the organizations and most of the managers. क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन चाह रही होती है और मैनेजर चाह रहा होता है कि उसका जो लेबर है, उसका जो मेन पावर है, उसके जो एम्प्लॉइज हैं वो हार्ड वर्किंग हो, फास्ट मूविंग हो, एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, टाइम कॉन्शियस हो, कंपैरेटिव हो, इम्पेशेंट हो और अपने वर्क की परसेप्शन को प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हो इन ऑर्डर टू परफॉर्म देयर वर्क। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के जो पर्सन्स होते हैं, उनको हम काउंट करते हैं दी पर्सनैलिटी ए और टाइप ए। इसके ऑपोजिट जो पर्सनैलिटी है दैट इज टाइप बी। द टाइप बी पर्सनैलिटी इज द ऑपोजिट ऑफ टाइप ए व्हिच इज कॉमनली एसोसिएटेड विद स्ट्रेस एंड यूजुअली लाइक्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टुडे। नो द पर्सनैलिटी, इसके ऑपोजिट जो हम डिस्कस कर रहे थे, जो पर्सनैलिटी है दैट इज एसोसिएटेड, इसको हम डिस्कस करते हैं या एसोसिएट करते हैं विद द स्ट्रेस। नो स्ट्रेस, व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेस, तो इसमें हमारे जो माइंड में इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहा होता है कि स्ट्रेस इज बैड थिंग और स्ट्रेस इज नॉट गुड थिंग। लेकिन इसको एक्चुअली अगर आप लिटरेचर को पढ़ें तो इसमें हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस जो है दैट इज नॉट ऑलवेज बैड। एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर स्ट्रेस होगा तो दैट इज कंसीडर्ड गुड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजर चाहता है कि उसके जो लेबर हैं वो थोड़े बहुत स्ट्रेस में रहें, लेकिन इतने स्ट्रेस में रहें कि वो अपना काम जो है उस स्ट्रेस की वजह से एफिशिएंटली कर सकें। लेकिन वो जो स्ट्रेस का लेवल अगर उस एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाता है देन दैट इज डेंजरस। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिर वो उसको हम कहते हैं बर्नआउट की तरफ चले जाते हैं या वो नेगेटिव उसके साइड पे चले जाते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो है दैट इज बीइंग वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन दैट इज लाइक बाय द ऑर्गेनाइजेशन कि वो उनके लोगों में, उनकी पर्सनैलिटीज में होना चाहिए। तो इस किस्म के जो लोग हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं दी type B sort of personalities. Now there is a deep relationship between personality and stress. इसको अभी हमने डिस्कस किया, पर्सनैलिटी को, स्ट्रेस को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने ये डिस्कस कर लिया कि जो स्ट्रेस होता है दैट इज नॉट ऑलवेज बैड। एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर स्ट्रेस होगा तो दैट इज कंसिडर्ड गुड, क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं फील करेंगे लोग तो वो अपनी एफर्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। तो एक पर्टिकुलर लेवल तक जो स्ट्रेस है दैट इज बीइंग रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर उस लेवल से आगे चले जाएगा स्ट्रेस
तो फिर दैट इज डेंजरस, आपकी हेल्थ के लिए भी डेंजरस होगा, आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी वो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड गुड. So in the present world, these two concepts have attained a very important role. Stress plays a very important role in everyday life of an individual and is present in one form of another. Stress affects the personality as well as the performance of a person. तो ये भी हमने डिस्कस किया. देखें जब जो चीज़ें हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, ह्यूमन रिलेशंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, all the personality culture, all these things are interrelated with each other. We cannot deal with the humans or the labor in isolation with all of these concepts, because all these things are interrelated with each other. If we understand the relation between stress and the personality, how they affect each other, we will be able to channelize and manage the stress in a better way. So as a manager, as a human resource manager, हमारे लिए बड़ा important है कि हम इसको देखें कि what is the sort of relationship between stress and personality. अल्टीमेट पर्पस क्या है कि हमने लोगों से काम लेना है, मैक्सिमम काम लेना है. उसके लिए वी शुड नो अबाउट द sort of relationship between stress and personality. Now stress won't affect individual's personality in a negative way. ठीक है, ये आप लोगों ने हमेशा माइंड में रखना है कि हमेशा ये नेगेटिव साइड पे नहीं होता. Due to the relationship between personality and stress, you come to know that how personality affects the stress and how stress affects the personality, how it affects your work, your relationship with other people, personal life, peace of mind are influenced. If you understand this dynamic relationship, you will lead a successful life. You will be able to perform better and would receive appreciation and should give a boost to your self-esteem by dynamic and by making the personality effects stress and stress affect the personality. So there is again two-way relationship between stress and personality. Personality is the product for culture to do the different things in different situations. Now that is very important. As a manager, you should know that how to act in a particular situation. Now in the same situation, अगर हम the different managers, all the different managers will not actually act in the same way. That depends on their personality. That depends on their personality, that how they will perceive a particular situation, and accordingly they will take the particular action. That depends on their person or the personality. It is affected by the environment, family, norms, values, society. Now ये देखिए इस तरह से हमने डिस्कस किया था ये सब चीजें, because all these things are interrelated with each other, and it affects your personality, it affects your decision within the organizations, and it affects your the way you are dealing with your laborers and the employees. The society produces different types of people or individuals. These individuals perform different tasks at different times under different situations. In other words, the culture, society, environment produces a different person in an army man, in a teacher, in a student, and in a sweeper. These individuals have to perform different tasks in the society. So that again, all these things help to build a particular personality in a person. So your personality that is also linked with the stress. Stress is the situation where there are demands on a person. Now वो क्या demands होती हैं, इसकी पॉजिटिविटी क्या होती है, उसकी नेगेटिविटी क्या होती है. इसमें जो एक जो पर्सपेक्टिव होता है इसमें, that is the social demands. To act or perform in a certain way, the person is unable to perform according to the demands of the situation. The pressure emerges. If that pressure is channelized and the person is able to perform the task, then the pressure is normal stress, positive stress or use stress, or we may say it is somebody good that out of the pressure or stress the person is able to perform the better. So अगर पर्टिकुलर एक डिमांड है, अगर हम उसको पॉजिटिवली लेते हैं और उसके लिए वी वरी अबाउट टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर टास्क, उसके लिए स्ट्रेस लेते हैं, और अल्टीमेटली बीइंग सक्सेसफुल इन अचीविंग दैट पर्टिकुलर सक्सेस. तो ये जो स्ट्रेस हम ले रहे हैं इसको हम कहेंगे दैट विल बी नॉर्मल स्ट्रेस, दैट विल बी द positive stress, and that is good for the personalities of the organizations. If this pressure is prolonged, it may transform into the stress. If a stress is putting something positive on you to do something in a given period of time, it is called use stress, and use stress is something good because it takes you able to achieve something. So use stress भी हम कहते हैं इसको, जो different theories हैं इसको use stress भी कहते हैं. तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे हैं, that all these are the positive effects of
stress. And if you achieve something, you feel good about it. But if the stress is too much, you will have negative consequences on your health. ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो आपकी हेल्थ इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, आपकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड गुड. ठीक है. So people handle stress differently. जो लोगों की कैपेसिटी होती है to handle the stress, that is not the same always, that is different. Again, positive stress जो है, जिसको हम use stress भी कहते हैं, you perform well due to the stress. That is the good thing, you know. Stress in exams, आप exams के लिए stress लेते हैं, मेहनत करते हैं, तो ultimately you get the good marks in the examination. So that will be considered a good stress, and that is the positive aspect of stress. What is the negative stress? If you can't adjust to the demands of the situation, then the stress is prolonged, then this negative stress affects on your performance, your health, and your overall personality. अगर आप वो डिमांड को बिल्कुल ही अपने सर पर सवार कर लेते हैं और बजाय इसके कि आप उसके लिए कोई एक्शन करें, मेहनत करें, आपकी अपनी हेल्थ उससे इफेक्ट होनी शुरू हो जाती है, तो वो स्ट्रेस जो है प्रोलॉन्ग हो जाएगा, एंड दैट विल बी लीडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिविटी ऑफ योर परफॉर्मेंस. वो आपकी परफॉर्मेंस को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी हेल्थ को जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट करेगा. तो दैट इज द नेगेटिव स्ट्रेस. तो ये आपकी थी जो आपकी सोशल डिमांड है. दूसरी जो होती है ऑर्गेनाइजेशनल डिमांड्स. The organizations have certain expectations. They require their employees to fulfill their certain tasks. This also puts stress on the employees of the workers. If the organization demands some sort of work from the employees, which he knows he will not be able to perform well, the person should say no, rather than putting extra stress on himself for something he cannot do. Or if someone has to do something too challenging for them, then they should first attempt to provide the work into smaller tasks. Do the first part of it. If he succeeds, then go on the next part. In this way, he will be able to manage the task. Now, organization demands. Every organization wants certain, standards to be achieved by the different individuals or the employees. उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, उनका एक परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होता है जो वो चाहती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उनको अचीव करे. No, it is again जो मैनेजर्स की जो रोल होता है, उसका रोल इस वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर एक पर्सनैलिटी है और एक पर्सन है और उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है, उसमें वो एबिलिटी ही नहीं है, और अगर आप उसे हायर टास्क दे देंगे, तो दैट विल बिकम अ सोर्स ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस फॉर दैट पर्सन. ठीक है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, आपको पता होना चाहिए कि आपकी लेबर्स की, आपकी एम्प्लॉयज की एबिलिटीज कितनी हैं. इसमें हमने डिस्कस किया था, कोई भी जो इंसान है वो कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता. उसमें प्लस पॉइंट्स भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. नो, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द मैनेजर टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट्स इन द मैनेजर्स, एंड अकॉर्डिंगली आप उनके प्लस पॉइंट्स को किसी कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल प्री डिटरमिन्ड ऑब्जेक्टिव्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. और आप किस तरीके से उनकी वीकनेसेस को ओवरकम कर सकते हैं या उनको इम्प्रूव कर सकते हैं, अगेन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. लेकिन अगर ये सारे एनालिसिस किए बगैर उनको आप बड़े चैलेंजिंग टास्क दे देंगे कि आपने ये करना है, तो उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव हो जाएगा. अल्टीमेटली स्ट्रेस क्रिएट होगा, मेडिकल प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, और इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, और ओवरऑल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो डिमांड्स हैं वो भी फुलफिल नहीं होंगी, और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस भी आपकी इफेक्ट होगी. It is therefore very important for the managers to rightly assess the individuals and accordingly assign the tasks according to their abilities. And if the proper, if some training is required, some guidance is required, you should give the due guidance training to those individuals in order to perform better at their organizations. इसमें जो थर्ड डिमांड होती है, that is the situational demands. Stress emerges out of expectations, situational expectations, cultural expectations, organizational expectations, and family expectations. तो ये जो expectations होती हैं या जो demands होती हैं, सिर्फ organization की नहीं होती, बल्कि आपके environment में भी different perspectives होते हैं, which are expecting different things on your part. So if you work according to the situation, there should be no stress. ठीक है, अगर आप इसको handle करेंगे सारी situations को, अपनी family को, ऑर्गेनाइजेशन को, कल्चर को, सोशल ग्रुप्स को, सोशल फैमिली को, पीयर ग्रुप्स को, कोलीग्स को,
So you will be, in a good position, and और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इसको इस sort of handling का या इस sort of stress का. Now, either example, if suppose if a person from Pakistani culture travels to Europe, there are different expectations in the society for you to act in a particular way. Your training, potential, socialization is from your Pakistani culture, but the demands of the immigrant society are different. You do not know everyday routines and norms of this society, and the demands and the expectations of that society are different. So इसको हमने डिस्कस किया था कि हर जगह का कल्चर डिफरेंट है, जो सोसाइटी की है उनकी डिमांड्स डिफरेंट हैं. तो आप जब डिफरेंट सोसाइटी में, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो कल्चर है दैट इज बिकमिंग मोर एंड मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज. तो आप एक अगर पर्टिकुलर कल्चर से उठ के दूसरे कल्चर में जाएंगे तो ऑफ कोर्स यू शुड नो अबाउट द नॉर्म्स, वैल्यूज, रूटीन्स, बिलीव्स इन दैट पर्टिकुलर कल्चर. अगर आप उसको नहीं स्टडी करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम होंगी. और आप जब भी वो कोई उसमें एक्शन करेंगे तो दैट विल बी affected. ठीक है. So it is very important to study these cultures before acting in a particular way in a particular society. Okay, I will take a little break here, then I will come again with the rest part of today's lecture.